Okay, so hi everyone, this is your host Saloni here, and we have a beautiful trainer, Dr. Krishna here. So, trainer, can you please say a hi to everybody here? Hi everyone. So, you can see this is a beautiful trainer, Krishna here, and today we'll be learning about Eggless Chocolate Banana Cake. So, I hope everybody is really excited for the session. And since we are already a little late, without wasting any time, let's get started. Over to you, Doctor. Hi everyone. I am your trainer, Dr. Krishna Purohit. And in collaboration with Pankhuri, I have come up with this masterclass in which I'm going to teach you to make eggless chocolate banana cake. So I'm sure आप लोगों ने cakes खाए होंगे, chocolate cakes भी खाए होंगे, eggless banana cake भी शायद खाया होगा. But today you're actually going to learn how to make one by yourself. ओके सो स्टार्टिंग विद द क्लास आई जस्ट वांट टू एनलाइटन यू कि आज की जो क्लास होगी वो एगलेस रेसिपी पे बेस्ड है सो हम एग्स या कुछ भी नॉन वेज यूज नहीं करेंगे वी आर नॉट गोना यूज जेलेटिन वी आर नॉट going to use eggs or egg yolk, egg white, whatever. So it's just going to be a eggless class. So starting with the class, first things first, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो bowls लेने वाली हूँ. So I'm going to be taking two bowls over here. जिसमें मैं एक बोल में मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लूंगी जो भी मेरे सूखे इंग्रेडिएंट्स होंगे आई एम गोइंग टू टेक दैट इन one of the bowls. In the other bowl, I'm going to take all the wet ingredients. Wet ingredients जैसे कि दूध, दही, maybe your sugar, maybe your banana puree that we're going to prepare, and also your oil. So वो सब आपके wet ingredients में आएगा. So this will just simplify your efforts and your work. सो दो कंटेनर्स लेने का फायदा ये होता है कि आप दोनों ही इंग्रेडिएंट्स यानी दोनों ही बैटर्स को आप इंडिविजुअली मिक्स कर सकते हो एंड देन यू कैन मिक्स इट टुगेदर सो यू गोना हैव अ वेरी क्लीन बैटर अ वेरी क्लीन स्मूथ बैटर जिसकी वजह से आपका जो स्पंज है योर एगलेस चॉकलेट बनाना केक विल जस्ट स्टैंड आउट ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अभी सबसे पहले I'm going to just introduce you to the tin. So this is the tin in which I'm going to be making my banana cake. So ये 7 by 2.5 इंच का केक है ये टिन है ये टिन आपको कोई भी केक सेलिंग केक के जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो शॉप में आसानी से मिल जाएगा द एडवांटेज ऑफ दिस इज कि इसको आप इंडिविजुअली स्लाइस कर पाओगे नाउ इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस if you don't have this tin it's absolutely fine you can use your regular tin your regular round tins are also okay आप इसमें भी ये बना सकते हैं now whatever ingredient whatever measurements I'm going to be taking is going to be according to half kg cake ठीक है so ये आधे किलो केक का मैं आपको आज जो भी measurements है वो बताऊंगी so in case you want to make a 1 kg cake or something you're just going to double the recipe in case you're going to make a 250 grams यानी कि आप पौना किलो का अगर आप केक बना रहे हैं तो ये जो भी मेजरमेंट्स है इसको आप हाफ कर देंगे सो प्लस करना है माइनस करना है दैट्स जस्ट गोइंग टू डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई अ बटर पेपर ऑन माय टिन सो बटर पेपर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू बी टेकिंग माय ऑयल So ये tin पे I am just going to put some oil, just a few drops of oil, ताकि मेरा बटर पेपर जो है वो अच्छे से cleanly it just sticks to my tin, right? Now what you can do is आप directly इस पे आपका जो oil है वो लगा दो and then you can pour your batter in it. That is also fine. But the idea of putting butter paper, especially in these kind of sponges, is very very important because इससे आपका जो स्पंज है उसके जो कॉर्नर्स है बेस है या टॉप है वो काफी मॉइस्ट होता है काफी सॉफ्ट होता है सो यू कैन जस्ट डू अ 2-step प्रोसेस क्योंकि इसमें हम सोकिंग नहीं करते हैं जो आपके रेगुलर स्पंजेस होते हैं उसमें यू यूजुअली सोक इट विद योर शुगर सिरप और योर वाटर सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इस तरीके से ग्रीस कर लीजिए Now after greasing I am going to take my butter paper here तो बटर पेपर में सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा टिन है उसका बेस मेजर करूंगी सो आई एम गोइंग टू टेक अ पेन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क द बेस जस्ट मार्किंग द बेस ऑफ माय टिन ओके यू कैन टेक योर सिजर और जो आपने यहाँ पे मार्किंग करी है
जो मार्किंग करी है आपने, if you're able to see it, okay, जो मार्किंग करी है, you're just going to cut it with your scissor. Like I said, this step is optional. आप directly grease करके आपका batter pour कर सकते हो. That means you can directly grease your tin and pour your batter directly in your tin. That is also fine. But like I said, this is like a tea time cake. So it will taste even better if it is more moist. Sides or base अगर ज़्यादा hard नहीं हो. So this is my butter paper. I'm just going to put it at the base. So because मैंने oil apply किया था, मेरा जो butter paper है बहुत ही cleanly it sticks to the base. Okay, so I have a very clean finishing to the butter paper. Likewise, I will also do the sides. जो sides है, you can just measure the sides. I'm just going to cut this in a straight line. These are butter papers or parchment papers. Okay. So जिन्होंने कभी baking नहीं करी है, for them, these are your butter papers, or you can call them as parchment papers. Okay. So मैंने एक लंबा सा strip काट दिया है from my butter paper. The remaining butter paper, I'm just going to keep it here. So I am just going to apply it on the sides as well. जैसे मैंने बताया, because यहाँ पे greasing किया है मैंने oil से, my butter paper just beautifully sticks it, so the oil is just acting as a glue between your tin and your parchment paper. That's how you are going to stick on all the four sides. Okay, so at the base and also on the four sides of your tin. So this thing is done. That means my tin preparation is done. So now I can easily start preparing the batter. Batter prepare करने से भी पहले मुझे batter prepare करने में around 10-15 minutes लगेंगे. So I am just going to preheat my OTG or my oven, or if you're doing it in a kadhai or on a gas, तो आप gas stove on करेंगे between low to medium flame या medium flame पे आप on करेंगे, and after just keeping it on, you're just going to put a kadhai or a cooker or your rota maker or whatever on top of it and just cover it with a lid. So you're just going to preheat your oven for about 10 to 15 minutes जब तक मेरा batter preparation होगा. Oven में जो भी बना रहा है उसका temperature होगा 180 degree C. So everybody, most of you all, whoever are making in the oven, the temperature is going to be 180 degree C. And if you're doing it on the gas, it is going to be, the flame is going to be between low to medium, or let's say medium flame hogi. Okay, now I'm going to start preparing the the dry ingredients first. So dry ingredients ke liye yahan pe maine ek channi liya. I have just taken a strainer so that I can just sieve or sift all my dry ingredients. So first I'm going to be taking 1 cup of maida. Now, if you make desserts, if you're into dessert making or sweets making, always remember that you don't take any ingredient just by अंदाजा. आप अंदाजे से नहीं ले सकते हो. अगर 1 cup है, so you can't take your chai ka cup and just put 1 cup in it. It doesn't work like that whenever you're making sweets, okay, or cakes for that matter. So आप क्या करेंगे, ये measuring cups आपको इस तरीके से मिलते हैं. These are your measuring cups. You also get measuring spoons.
सो इसमें नंबर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1/4 कप, दिस इज हाफ कप, दिस इज हाफ टी स्पून, 1/4 टी स्पून, तो ऐसे प्रॉपर उसमें मेजरमेंट्स लिखे होते हैं. सो आप उस तरीके से ही जो भी अभी मैं डाल रही हूँ आप उसी तरीके से मेजर करिए. यू ऑलवेज यूज योर मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स टू मेजर all your ingredients. Okay, so this is 1 cup of my maida. So 1 cup of maida first. Next I am going to take my baking powder and baking soda. Because this is a chocolate banana cake sponge, I will also take some unsweetened cocoa powder. Now I have two types of cocoa powder over here. This is my sweetened, this is my unsweetened. I always prefer taking the unsweetened one because आपके बैटर में आप already sugar डालते हो. तो अगर आप sweetened cocoa powder भी ले लोगे, sugar भी ले लोगे, your sponge is going to be too sweet. Okay. So इसमें सबसे पहले हमने मैदा लिया. Next I'm going to be taking my baking powder. This is from the brand Wickfield. Wickfield का baking powder है. I'm going to be taking about 1 teaspoon of my baking powder here. So just take 1 spoon. Now this is not 1 teaspoon. If you want 1 teaspoon, with your finger, you're just going to level and take out all the excess just to get a flat surface. So this is your 1 teaspoon of your baking powder. Next, I'm going to be taking my baking soda. Again, this is from the same brand. This is Wickfield. So half teaspoon हम लेंगे. हमने 1 teaspoon baking powder ले लिया, half teaspoon हम baking soda लेंगे. So baking soda को भी जैसे मैंने बताया, you're just going to level it with your finger, just flatten it and then put it in your dry ingredients. उसके बाद मैंने बताया कि मैं मेरा unsweetened cocoa powder लूंगी. So I am going to be taking around 3 tablespoon या 1/4 cup आप डाल सकते हो. If you are a chocolate lover, if you want that extra kick of chocolate, you can also put about 4 tablespoons. Okay, I am going to be taking somewhere between 2 to 3 tablespoons. So this is my tablespoon over here. Like I said, you're always going to level it with your finger. Just level it with your finger. This is 1 tablespoon. This is your 2nd tablespoon. Just going to be taking the last one. Now this cocoa powder is from, this is a Malaysian brand cocoa powder. Just flatten it. This is my 3rd tablespoon. So 3 tablespoons of your cocoa powder. And now I'm just going to sift all this together. Okay. You can take your spatula. If there are any lumps, you can just sift it out properly. Also, I'm going to be adding my sugar in the dry ingredients today because sugar में भी lumps होते हैं. So I'm going to be taking about half cup, यानी कि आधा कप यहाँ पे मैं sugar लूंगी. This is my घर का पीसा हुआ sugar, powdered sugar. You can also take castor sugar. Hey, trainer. Yes, just leveled it and it's in the strainer. Yes. So I guess there are a few questions here. Let me just address them once. Yeah. Okay. So there's a question that one, do we need to preheat our oven until then? If yes, so at what time should we preheat it? So I already told you all, you're going to preheat it at 180 degrees C. So all the making time, your OTG or your gas is going to be on. Okay. Okay. So yes, Sainaka, I hope you got your answers. You are supposed to preheat your oven for at 180 degrees Celsius. एंड जब तक आप इधर बैटर बनाएंगे उतनी देर के लिए वहां पे आपका ओवन जो है वो प्रीहीट होते रहना चाहिए. एंड अगर आप गैस पे बना रहे हो तो गैस आपकी उतनी देर तक प्रीहीट होती रहनी चाहिए.
रूपाली आप कोई भी parchment paper ले सकते हो. It's not like there is some specific parchment paper that paper. Okay. So trainer, there's a question. Is there any Yes. alternative for cocoa powder? Instead of cocoa powder, I told you can take sweetened, but if you're making a chocolate banana sponge, you will need cocoa powder only. Okay, especially in the making of the sponge. Any more questions, Saloni? No, we do not have any more questions. Okay. So now for the wet ingredients, I'm going to be taking my large sized bananas. So these are just two bananas that I have taken, two large sized bananas. I'm going to be taking my mixer jar. I'll just peel off my banana. Okay, I've just peeled it off. And now I'm just going to break it into some pieces. Take the other piece as well. Your other banana. This is for a half kg. So agar aap 1 kg bana rahe ho, you are going to need 4 bananas. Okay. Okay. So all your bananas in your grinder. Next, I'm going to take my regular sugar. So I'm going to be taking about 3/4 cup. So 3/4 cup agar aapke paas nahi hai, so aap half plus 1/4 ले सकते हो. That is half cup of your regular and 1/4 cup. But like I said, हमने already पीसा हुआ शक्कर जो है हमने इसमें डाला है, which is about half cup. So I'm just going to be putting about 1/4 cups here. So I'm just going to be taking 1/4 cup of my sugar. In my banana only. Okay, so to make banana puree, you are going to need 3/4 cup of sugar and 2 large size bananas. But मैंने dry ingredients में already half cup डाल दिया है. So I am just going to put additional of 1/4 cup in my banana puree here. Okay, जिसको मैं अभी यहाँ पे grind करने वाली हूँ. So इसके अंदर मैंने क्या ले लिया? I've just taken 2 large size bananas and I've taken 1/4 cup of my sugar. Now I'm just going to ask my help to grind it for us. जब तक वो ग्राइंड होता है, लेट्स टेक द अदर वेट इंग्रेडिएंट्स. तो दूसरे वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ सबसे पहले मेरा ऑयल. सो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अबाउट 1/4 cup again of my refined vegetable oil. This is my refined oil. Okay, refined vegetable oil, and I'm going to be taking half cup. Yeah. So I have taken 1/4 cup of my refined oil. Now make sure you take refined oil. Don't take sarso ka tel or something which has like a very strong aroma. So it's just going to overpower the balance and the flavor of your cake. Make sure you take a refined. You can take Fortune ka refined oil. That is also fine. Okay. Next, I am taking curd over here. This is मेरा घर का जमा हुआ दही. So I'm just going to take the thick part of the curd here. So just the thick part of my curd. Like I said, you always balance it. अगर थोड़ा भी extra है, make sure you remove it, flatten it, and then add it in your oil. Yeah, यहाँ पे हमारा banana का puree बन गया है. So I'll just show you what the puree looks like.
Okay, it's nice and soft. Okay, so I'm just going to give a good mix to my oil and curd together so that it combines and there are no lumps. Okay, जो आपके curd के जो lumps है वो सारे oil के साथ अच्छे से mix हो जाए and you get a smooth mixture over here. Okay, next यहाँ पे जो मेरी banana puree ready हुई है, I'm just going to take all the puree as well. Okay, this is all my puree. Okay. With this recipe, yeah, sorry. Yeah. So, Tina, there are few more questions. तो there's a question Yeah. कि मैम यहाँ पे जो हमें केले लेने हैं वो हम पके हुए ले सकते हैं या फिर थोड़े से कच्चे वाले लेने हैं? नहीं, पके हुए केले लो, that's better. Otherwise, you will get that raw aroma whenever you're eating your cake. Okay. Okay. For OTG, should both the rods be on? Yeah, both the rods should be on. Okay. Also, trainer, can you repeat the amount of curd that we took here? We've taken half cup of curd. आधा cup curd लिया है हमने. Okay. Can we use buttermilk instead of curd? Yeah, you can use buttermilk also, but when you use buttermilk, आपके पास कोई scope नहीं होगा to add the fourth wet ingredient, which is going to be your milk. मिल्क भी हम इसमें यूजुअली डालते हैं, लेकिन बटर मिल्क ऑलरेडी काफी पतला होता है, तो मिल्क का क्वांटिटी आपको कम करना पड़ेगा. ओके. यस कल्याणी, आपको सारी की सारी चीजें जो इसका पीडीएफ लिंक है या फिर जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी वो सब कुछ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी. Yeah, so everything, each and every measurement of my dry as well as wet ingredients, how to make the banana puree, everything step by step has been written in the PDF. So even if you've missed on to any measurement, don't worry. We will just sort that. You will just sort that when you look at the PDF. Okay. So I am just going to add the special ingredient, which is going to be my vanilla essence over here. So I am just going to take about 1 teaspoon or about few drops of it is also fine. Okay, you can just take about 1 teaspoon of your vanilla essence. जो मैंने vanilla essence लिया है, this is by the brand Flying Bird. You can take by the brand Fab also. Fab के भी vanilla या जो भी ऐसा अगर आप यूज करते हो, Fab के essences काफी अच्छे हैं. Okay, so I'm just mixing the essence in my wet ingredient. Okay, so let's just revise this. हमने dry ingredients में लिया है 1 cup मैदा, 1 teaspoon baking powder, half teaspoon baking soda, and we've taken about 3 tablespoon of our cocoa powder. ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स. वेट इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है 1/4 कप हमारा रिफाइंड ऑयल, हाफ कप ऑफ आवर रेगुलर घर का कर्ड, and we've taken about the puree of 2 bananas and 3/4 cup of sugar जो हमने मिक्स किया है उसका हमने प्यूरी लिया है, and we've added little essence in it. So ये हो गए हमारे dry and wet ingredients. There is one more wet ingredient which is going to be your milk, but milk का quantity will on how you mix these two together. Now there's one more ingredient that you can add in your dry ingredients, which is going to be your milk powder. आप milk powder भी इसमें add कर सकते हो. Now this is completely optional. If you don't have milk powder, ये जैसा मैंने बताया आप वैसे ही stick यही recipe को आप stick कर सकते हो. But if you want to add this, this is just going to give another taste to your cake. So you can just add about 2 tablespoons. Okay, exactly 2 tablespoons of your Nestle everyday ka milk powder. Now if you don't have this, don't worry, you don't compulsorily have to put it only. I have it, so I'm just adding it. Okay, so 1 tablespoon. और इसमें usually lumps नहीं है, so it's okay even if you're not sifting it. Okay, this is my second. So 2 tablespoons of my milk powder. Like I said, it is completely optional. You may or may not add it depending on your requirement. Now I'm just going to mix all my dry ingredients properly.
just mixing my dry ingredients separately, ensuring that there are no lumps, ensuring that all the particles, all the powders are mixed together before I actually mix the two together. Okay. So ये हो गया हमारा dry ingredients. Making sure that I'm mixing my wet ingredients also properly. Just giving it some rotations. Just ensuring that there are no lumps and my oil binds together with my puree and my curd. Okay, so this is proper and this is proper. Now I'm going to put all my dry ingredients in my wet ingredients and I'm going to start mixing. My tin is ready over here. My OTG is baked. Now I am sure that all I need to do is just mix my dry and wet ingredients together. Okay, जैसे मैंने बताया मेरा OTG ready है, मेरा tin ready है. अभी मुझे सिर्फ dry को wet में mix करके मेरे tin में pour करके directly bake करना है. Okay. So just putting all my dry ingredients. Okay, सारे dry ingredients मैंने इसमें डाल दिए. I will just give it the cut and fold. Cut and fold यानी कि आप इस तरीके से side से लेंगे and you're just going to fold it. So you're just cutting it, you're folding it. You're just cutting your batter and you're folding it. Okay. So you just don't go too hard. इसी तरीके से आप इसको mix करते रहेंगे so that there are no lumps. Okay. Now at this stage, if you feel that your batter is too hard or something, you can add about 1 to 2 tablespoons of your milk in it. Because of the vanilla essence and my bananas, काफी strong aroma आ रहा है batter का. Okay, so now if you see, the batter is a little thick. So I will just add 2 tablespoons of my milk here. This is my regular milk. So 1 tablespoon and the second tablespoon of my milk, right? Again, I'm going to mix all this together. So when your baking soda starts to react, you can't literally keep on mixing. You have to be a little quick in this and you have to make sure that you pour your batter in your tin ASAP. Okay. So this is still smooth enough. My batter still looks, do you see how this is just falling? The consistency of my batter. Yeah. Now I'm going to be taking my tin and I will put all my batter in my tin. See, it's just folding on one another, right? Make sure you take all your batter and put it in your tin entirely. This is a very delicious recipe, guys. Okay, so I have just poured my entire batter and I'm just going to tap it. You tap it a couple of times ताकि जो भी air bubbles है वो ऊपर आ जाए और आपका जो sponge है वो perfectly baked है. Okay, nicely your batter has spread. Now, if you want, again, this part is optional. If you don't want your choco chips, you can avoid this step. If you want, you can add some more. So, trainer, there were a few questions here. Yeah, so I'll just put these choco chips. I'll just put it to bake and then we are done. We have all the time in the world after that. Okay, sure. Just a moment.
Okay, so I'm just going to sprinkle these choco chips. Saloni, do you want me to click a before picture at this stage? Yeah, if you can click it, so please click one more picture. Yeah. I'll have to take my phone just a moment. Or do you want me to click from another phone? Whichever is fine, you can do that. Yeah, so let's not take out the camera, otherwise it will just spoil the orientation again. Yeah. I'll just click a photograph from another phone. Camera. Okay, sure. Yeah. Okay, so I'm just putting this in my OTG to bake for another 20 to 25 minutes. So 20-25 minutes बाद हमारा केक कैसे दिखता है? We will check that out. Okay, now you can take the questions if any. Okay. So there's a question, ki ma'am, if you want to replace it with egg, is it possible? If yes, so when should we add an egg in it? So egg, I think will go in your wet ingredients and you can take about 2 large-sized eggs. Eggs के जगह आप सिर्फ I think आपका curd avoid कर दोगे, बाकी सारे ingredients same ही रहेंगे. Okay. Okay. In what size tin did you use, Abhi? This is a 7 by 2.5 inch tin. So 7 being the length and 5 being the breadth. Okay, ये tins आपको mainly market में मिलते हैं for your tea time cakes. Okay, so ये size मैंने लिया है. आप आपके square, round, heart कोई भी mold में pour कर सकते हो. Okay. So there's a question that ma'am, explain, size and time for half a kg cake. Size of what? The tin. So half kg Yes. के लिए, if you're not using a tin like this, the size for half kg is going to be about 5 to 6 inches. 5 या 6 इंच का tin होता है, आप वो use कर सकते हो. And what was the other thing? Size and time. Time. So half kg का again it will depend. अगर आप एक for example अगर आप एक छोटा tin use करते हो जिसमें batter ज्यादा आपने भरा है, ज्यादा as in छोटा होगा तो batter ज्यादा भरेगा, right? So उसमें जो baking time है it will be a lot. It will be for example 25 to 30 minutes. अगर आपका tin बड़ा है, let's say कि 6 inch का tin है, so 6 inch में आपका जो batter है वो काफी फैल जाता है. So उसमें क्या होती है, बेकिंग जल्दी हो जाती है, यानी कि जो थिकनेस है आपके बैटर की वो कम हो जाती है. सो उसमें जो बेकिंग है इट विल बी अराउंड 15 टू 20 मिनट्स. जैसे कि कपकेक्स 10 मिनट में बेक हो जाते हैं और वही बैटर अगर आप केक में यूज करोगे तो 20-25 मिनट्स लगते हैं. ओके, सो द टाइम विल वेरी फ्रॉम योर बैटर एंड वट एवर यू आर मेकिंग. Okay. Jyoti, for your question, 1 kg में 2 pounds होते हैं. Okay. So yes, ladies, do we have any more questions? अभी तक Saloni, के you've जितने भी become a questions baker by now, right? yeah, I have become a baker by now. अभी मैंने अभी like person में I baked chocolava cake जो आपकी recipe थी and it turned out Wow. very nice. Did it? Yes. Very nice. I'm glad. It is a really nice recipe. बहुत ही tasty बना था and the best part was एक तो थोड़ा सा ज्यादा बेक हो गया था तो उसमें इसके बीच से सेंटर से वो नहीं निकला but एक properly bake हुआ था तो it was a good बीच में center was very nice. Very nice. So it's like a good stress buster for you. कभी exams का tension हो Yes. कुछ हो, just bake something, eat, right? Yes, yes. It अभी just मेरे enlightens एग्जाम्स your चल mood. रहे हैं. हाँ, अभी हाँ. मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो I just bake at times. कुछ ना कुछ अच्छा, बनता ही very रहता nice. है. Very nice. You're also doing icing or just baking? No, I do like a proper cake अगर मैं बनाती हूँ तो अभी के लिए तो I'm just doing
एग्जाम टाइम पे लाइक ब्राउनीज हो गया या फिर ये कपकेक्स हो गए, ये सब चीजें मैं बनाती हूँ। अदरवाइज तो प्रॉपर आइसिंग Very वाइसिंग के nice. साथ केक। Yeah. So, guys, I think Saloni is also going to come up with a masterclass on bakery very soon. Yeah. I'll also be नहीं the नहीं, one to आप join लोग that class. नहीं नहीं, आप लोग बहुत अच्छे सिखाते हो। आप लोग, यू आर द टीचर्स एंड यू आर द ट्रेनर्स। मैं होस्ट करूंगी। अच्छा, ठीक है. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So there's Do a we have more question questions? that, yes. So there's a question that trainer, अगर हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो जनरली कितना टाइम लगता है? कढ़ाई में भी अगर आपकी फ्लेम पे डिपेंड करेगा. अगर आपकी फ्लेम मीडियम है तो अराउंड 25 मिनट्स में बेक हो जाएगा. अराउंड 25 मिनट्स, आई से, नॉट एग्जैक्ट. और अगर आप मीडियम टू लो में रखेंगे तो 30-35 मिनट्स. अगर लो पे रखेंगे तो 40-45 मिनट्स. Okay, so the time will vary according to the flame that you're keeping to bake. Okay. Let me see if we have any more questions. So yes, I don't see any more questions, ladies. If you have any more questions, please feel free to put them here. And अभी केक बेक Yes. होने में तो around 25 minutes लगेंगे. तो I Yes. wonder if we'll be able to show it to you here. अगर नहीं Let's दिखा say, पाएंगे, let's see if this is done. We will just check with the toothpick around 6:27 or something. If it is done, I will just show you how it looks. yes. तब तक के Yeah. लिए आप लोग क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। एंड इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस जो आप चाहते हैं कि डॉक्टर कृष्णा उन क्लासेस के साथ आए, तो डू लेट अस नो अबाउट दैट आल्सो, वील पुट देम हियर। Yes. Saloni, how many participants do we have? In the beginning we had around 40 participants. अभी तो कम हो गए हैं when once you put them in the baking. तो Oh, अभी तो नहीं। yeah. हाँ I know. okay. So there's a question. What do we need to add in kadhai for baking? You need to add your tin, no? कढ़ाई के अंदर you can just keep your stand. You can keep a छोटा सा stand. उसके ऊपर आप आपका tin रखो and then just cover it with a lid or Like, a thali or whatever. so she's asking if we need to add any kind of salt or water in the kadhai, or we just need to put it like that. तो वाटर तो आप 100% नहीं डालेंगे. आप सॉल्ट डाल सकते हैं. सॉल्ट विल जस्ट गिव यू दैट यूनिफॉर्मिटी कि जिससे आपका जो हीटिंग है पूरे कढ़ाई के अंदर, इट इज जस्ट गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम. So salt डालना या नहीं डालना is completely your call. I would suggest if you just want to make it like very professional cake, you can definitely put salt. But again, even if you don't put salt, if your lid is covered properly, if you're not opening your lid again and again, I think आपका sponge काफी अच्छा turn out होगा, even without the salt. Yes. Okay. Yeah. Ruhani, for your question, you can actually watch the recording, क्योंकि अभी हम पूरा चीज वापस से रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ इन केस आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंस इट्स अ फ्री कोर्स, तो आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ओके, so there's a question. Why you have used vanilla essence instead of chocolate essence here? I've used vanilla because it is my banana thing. You can use chocolate essence also. There's no strict rule that use vanilla or your chocolate only. Vanilla basically एक flat, एक neutral essence जैसे हम use कर सकते हैं. For example, if I'm making a mawa cake or if I'm making a rasmalai cake, if I don't have a rasmalai essence, I will put my vanilla essence. Okay, so that is the idea because it's like a neutral essence. So आपका जो भी flavor है अच्छे से उसमें enhance होता है, but you can also put your chocolate essence in this. Right? Okay. Yes. ओके, सो नई प्रणाली, जो आपका गैस होगा, गैस पे अराउंड आपको लगता है 30 to 35 मिनट्स आपका बेक करने के लिए फुल्ली केक। बस उसको एकदम कंप्लीट हाई फ्लेम पे मत रखिए, लो टू मीडियम फ्लेम में रखिएगा। 30 to 35 मिनट्स में आपका एक अच्छा सा केक बन के रेडी हो जाएगा।
बिल्कुल फुल फ्लेम पे मत रखिए क्योंकि हो सकता है आपकी कढ़ाई वढ़ाई जल जाए। तो ये मत करिएगा, या मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम में रखिएगा, आपका केक बन जाएगा। कढ़ाई भी जल जाए और आपका जो टिन है उसका बेस भी काफी जल जाएगा, द it will be soft and the sides will have done. वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कढ़ाई में या ओटीजी में बनाते हैं, हर 10 मिनट्स में वो लिड खोलते हैं या जो डोर है ओटीजी का वो खोल के वो चेक करना है कि नहीं। ओटीजी का जब डोर खोलते हो उससे सारी हीट बाहर निकल जाती है। नाउ व्हेन यू क्लोज इट अगेन, द ओटीजी or your कढ़ाई take equal amount of energy और the probably ऐसे ही वो वापस देता है या दोबारा खोलने लग जाते हैं. So don't do this. Whatever you're making, if you're half kg or a 250 gram cake, so you just get that little bit of ट्रेनर, आई गेस देयर इज सम इशू विद द नेटवर्क, आपका वीडियो बहुत ज्यादा रुक रुक के आ रहा है। या लेडीज, जस्ट गिव अस अ मिनट। ओके, सो बेसिकली ट्रेनर वाज सेइंग कि आप जब भी अपना केक बना रहे हैं या फिर आप अपना गैस पे भी बेक कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बार बार अपना ओटीजी या फिर आप उसको गैस को खोल के मत देखिए। अगर आप बार बार खोल के देखते रहोगे तो आपका जो साइड्स है वो तो इजीली पक जाएंगे, बीच का जो एरिया होता है ना वो अनकुक्ड रह जाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा केक बीच में अनकुक्ड होता है, साइड साइड बहुत अच्छे से पक जाता है। सो वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि अनइवन हीटिंग की वजह से। तो अनइवन हीटिंग का मतलब है कि आप बार बार अपना वो खोल खोल के हर 10 मिनट पे चेक कर रहे थे। सो यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दैट। आप उसको अराउंड 25 मिनट्स के लिए तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, डू नॉट टच इट फॉर अराउंड 25 मिनट्स। एक बार 25 मिनट्स हो जाए उसके बाद आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपका केक कितना बेक हुआ है। अगर आपका बेक हो गया है प्रॉपरली तब तो अच्छी बात है, आप 2-3 मिनट बाद उसको हट निकाल लीजिए। नहीं हुआ है तो जस्ट लीव इट फॉर 10 more minutes लाइक दैट एंड आपका केक प्रॉपरली बेक हो जाएगा विदाउट इट बीइंग अनकुक्ड फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो नेक्स्ट जो है, देयर वाज अ क्वेश्चन, कैन वी मेक इट इन माइक्रोवेव? यस, यू कैन मेक इट इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में भी आप कन्वेक्शन मोड जो होता है उसके ऊपर अपना केक बेक करेंगे। अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे डालिए, प्रीहीट करिएगा पहले। प्रीहीट करने के बाद अपना टिन डालिए उसमें, इजिली अपना बेक करिए। अराउंड 20 to 25 मिनट्स आपका माइक्रोवेव में भी लगेगा बेक होने में। वंस इट गेट्स बेक्ड यू आर गुड टू गो। I think Saloni just went off because of या some या network issues or God knows what. नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट नाउ। Yeah. So guys, I think it's going to take a while for the cake to be baked. So once it is baked, I'm just going to share a good picture with Saloni and she will share it with you all. So you all will just get to see how that looks. I will also send you a picture after I have given some slices to the sponge so that you will just get a clearer idea. Okay? Yes. Okay, Trina. And I think we have addressed all the questions also. So I think we are good to go now. And जो भी picture होगा, please don't worry, ladies. We'll share it on the Pankhuri app. Pankhuri app के ऊपर आपको मिल जाएगी picture, आप वहाँ पे जाकर के check कर सकते हैं. And you can have an idea कि कैसा केक बेक हुआ था. Also जो इसकी recordings होंगी and जो इसका PDF होगा वो भी आपको Pankhuri app के ऊपर मिल जाएगा. Trainer. शुभोनी, ट्रेनर का नाम है ट्रेनर कृष्णा। ओके, ट्रेनर कृष्णा पुरोहित।
ट्रेनर आपका स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। लेट मी जस्ट चेक माय network also. Mine is working fine. नहीं प्रणालिनी, ऐसा नहीं है। अगर आप बार-बार उसको खोल के देखते रहोगे तब ज़रूर पड़ेगा। और अगर आप उसको बहुत ही हाई फ्लेम पे बेक करोगे, तो आपका वो जल जाएगा। अगर आप लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक करोगे, तो वो प्रॉपर्ली बेक होगा। ओके? Yes, I will share the picture on the group chat on Pankhuri app. ओके? पंखुरी ऐप के ऊपर जो ग्रुप होता है, मैं उसमें शेयर कर दूँगी। ओके? So yes, ladies, I think it was a good session. We have addressed all the questions here. And आपको इस सेशन की PDF and recordings पंखुरी ऐप के ऊपर मिल जाएंगी. You can go there and you can check it out. Also, please go on Google Play Store and rate us and review us because that matters a lot to us. So please do that. And I hope to see you all in the next session. And please go on Pankuri app, check out our amazing features of rupees and games and everything. And you can win lot of things from the app itself. You can also unlock our paid classes using the rupees. तो आप जाकर के ऐप के ऊपर चेक कर सकते हैं and it is going to be an amazing experience for you. I promise you about that. So yes, without wasting any time, let's end the session because we are almost done with it. And the picture hogi, I will share with you on the app itself. Okay. So thank you so much, ladies, for joining us today. Thank you so much, Trainer Krishna, for joining us today and teaching us such a beautiful and easy recipe to make. And I hope to see you all in the next session. Till then, bye bye, take care, and have a great day, ladies. Bye bye.